Now, Muhammad, what जी I'm saying that he joined earlier CMA US. He gave both the exams, I think, in one exam, two exams are there in CMA US. He completed in both the exams in 8 months, 4 months, 4 months. Then he joined for ACCA, skill level 5 papers and professional level 4 papers, 9 papers. And he completed each paper in each quarter. So in approximately a duration of around 3 years, he completed both the courses with good marks, not only pass, with good marks. So he is one of the, I can say, one of the best person to guide you, to tell you what you should study, how you should practice, what you should refer, whatever I am saying, or what is the loopholes in my teaching, that where you should not hear me, everything he will be able to say. And he is given the full authority, full option, that he explain everything without any thinking that I am sitting. Believe me. If suppose नहीं Lakman, सर I am there थैंक in, यू आपके आपके कॉम्प्लीमेंट कह रहे थैंक यू आई वुड जस्ट से दैट यू हैव गाइडेड मी राइट इन माय स्टडीज तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट you कि हम can लोग क्या करना start your, चाहिए can you start your video also? Just for a few minutes, 4 5 minutes, हाँ मैं ऑफिस में हूँ लेट मी चेक ओके if possible. Otherwise, no issue. आई एम नॉट श्योर अगर क्लैरिटी है No क्योंकि problem. यहाँ पे वो अरे Yes, yes, sir. so I think it's okay but यहाँ पे सनसेट हो रहा है so I think there is small No reflection problem. One second, the let window. me make the video. Make. Yes. Now, sir. So thank you, sir. सबसे पहले thank you for inviting me to this session, and I would also like to thank to the support that you have given me in my career, in my journey to achieve this ACG as well as CMA. So what I would say is that तीन कुछ चीजें हैं, 2-3 things which we should take care when pursuing international courses. जो प्रकाश सर हमेशा क्लास में बोलते हैं, I would just would like to highlight it. Some people may think it funny because we are coming from a background जहाँ पे Indian वो जो education system है, when we come out of that to an international course हमको थोड़ा change करना पड़ता है. The first thing in that is that we should be concentrated on studying the concept. अब कंसेप्ट में थियरी आपको a+b² वो सब पढ़ के ज्यादा फायदा नहीं है. दैट वी शुड नो द बेसिक एंड उसके बाद उसका जो अप्लीकेबिलिटी है, हाउ टू यूज दैट फॉर्मूला और वो कहाँ पे यूज करना है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलते हैं आपको. और ये सर हमेशा इसको क्लास में जोर से बोल देते हैं कि हाउ वी शुड बी स्टडीइंग इट. एंड सेकेंड थिंग, हम लोग ये सोचते हैं कि द मोर वी राइट उसमें ज्यादा मार्क मिलते हैं, द मोर वी शुड बाई हार्ट उसमें अच्छा होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. बाई हार्टिंग उससे कोई फायदा नहीं है. वी शुड बी ऑलवेज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कंसेप्ट. कंसेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन आपको लेफ्ट एंड राइट आ जाएंगे, स्पेशली इन सीएम में. सीएम में आप पढ़ेंगे एक पेज में, लेकिन क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे 1000 तरीका से आ जाएंगे. सो एंड टू बी फ्रैंक, प्रकाश सर हमेशा बोलते हैं कि आपको अपना नोट बनाना चाहिए. दैट इज वेरी ट्रू. अपना नोट कैसे बनाएंगे, आई वुड स्लाइटली डिफर विथ इट. वो हमेशा बोलता है कि कंप्यूटर पे बनाना चाहिए, एंड आई हैव नेवर मेड ऑन कंप्यूटर. मेरे पास एक 2 कॉपी है, सीएमए के एक कॉपी है और एक एसीसी के लिए 2 कॉपी है. मेरे हैंड राइटिंग है, आई जस्ट मेक स्मॉल नोट उसमें बिकॉज आई एम मल्टीलिंगुअल. आई एम प्रोफिशिएंट इन 5 लैंग्वेजेस. कभी कुछ हिंदी में लिखते हैं, कभी कुछ इंग्लिश में लिखते हैं, कभी कुछ और लैंग्वेज में लिखते हैं. बट यू शुड बी एबल टू, जब आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट का क्या एप्लीकेशन होना चाहिए, you should be directly go to that page and then refer to that particular note and then take it out of it. So this is something which is a must. Prakash sir बोलते हैं कि ये होना चाहिए. Whether it is computer or copy, that is depending on you. Every person has a learning style और उसके ऊपर आपको खुद डिसाइड करना है कि what should be the way. किसी और से पूछना नहीं है. Second thing, ये इंग्लिश के बारे में हम लोग बहुत सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं है तो शायद ये क्रैक नहीं कर पाएगा. What Prakash sir is saying is right. लैंग्वेज के ऊपर आप जाएगा तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, बिकॉज
यूएसए इंग्लिश उसको पढ़ के वो समझने के लिए थोड़ा सा आपको 2 मिनट बैठना पड़ता है। आप 2-2 मिनट बैठेंगे तो आपका पूरा एग्जाम का टाइमिंग खत्म हो जाएंगे। सो यू शुड बी फ्लुएंट ऑन द कंसेप्ट, और कंसेप्ट अप्लाई करके निकालना पड़ते हैं। और थर्ड थिंग, नेवर एक्सपेक्ट दैट कि मैं पूरा पढ़ने के बाद एग्जाम दूंगा, वो कभी आने वाला नहीं है। आप हर क्वार्टर में जैसे वो टाइम आ जाते हैं पैसे भरिए, जब पैसे भरते हैं थोड़ा गर्मी फील हो जाएगा, एंड देन यू विल सिट फॉर द एग्जाम वेदर यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट। आप ऑफिस से छुट्टी लेंगे, आप घर में जाके कमरे बंद करके करेंगे, अदरवाइज ये होने वाला नहीं है। एंड आई रिमेम्बर माई इन माई सीएम में थोड़ा मेरे को ये कंसेप्ट था कि मैं जब रेडी है तब जाके एग्जाम दूंगा, वो कभी आया नहीं। देन आई डिसाइडेड कैसे भी करना है इस महीने के एंड पे, देन आई डिड द एग्जाम। और मैंने वो गलती जो है एसीसी में नहीं किया। इन एसीसी व्हाट इट इज दैट हर क्वार्टर में देना है भाई। जैसे वो आपके रिजल्ट आ जाते हैं, उसके 5 दिन के बाद मैं फीस भर देते, एग्जाम सेंटर बुक कर देते, एंड देन आई गो फॉर एंड सिट फॉर द एग्जाम। सो दीज थिंग्स आर टू बी टेकन केयर। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कंसेप्ट आपको मालूम है तो भी किस तरीके से क्वेश्चन ट्विस्ट करके आते हैं उसमें बहुत आई मीन दैट प्लेज अ बिग रोल। आपको एटलीस्ट 3-4 तरीका का जो ट्विस्ट ये लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर थोड़ा कमांड लाना पड़ता है। यू शुड हैव दैट कमांड। तो जैसे कि आपका वर्किंग कैपिटल का वो कैलकुलेट करना है सब, उसका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट है, कैलकुलेट करना, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। उसमें भी 3-4 तरीका है, बिकॉज दे डोंट गिव एनी आंसर। अगर आपको मुंबई जाना है वो आपको पहले दिल्ली का एड्रेस देगा, फिर दिल्ली से दूसरा फ्लाइट पकड़ के मुंबई आना पड़ेगा आपको। दिस इज द वे दे विल गिव द क्वेश्चन। सो दैट यू शुड बी नोइंग कि इनका क्या तरीका में क्वेश्चन आने वाला है। जी प्रकाश सर, आपका कुछ कमेंट? I'm saying that my wife is जी still studying and she is doing a course on what do you say? अच्छा, जो Image इम्पोर्टेंट building. इम्पोर्टेंट बात मैं इसमें नहीं बोला। आई एम हाँ, नॉट एन अकाउंटेंट्स गाय, आई एम नॉट अकाउंट्स गाय, मैं टेक्निकल आदमी हूँ। नहीं ठीक है, सो आप इफ आई सही क्लियर बात दिस है। थिंग। Since I am connected with you for around 3 years, I know in जी and out everything in you. जी Maybe I have not met physically with you, but I know everything about you. So what I want to say that ki my wife doing image consulting, then soft skill, then how to present yourself, table manner, so many things she's learning for last 2 years approximately. जी। And this is international course taught by international faculties and all that. Today also, since morning जी she is not there in home. She is attending a I mean to say event in HHI in Kolkata from जी। morning 10 a.m. till 8 p.m. already she has not yet come. Still she is there. So and she is a very, very good student, believe me. जी She has accounting knowledge, but still she want to develop in this area which is not her domain. ठीक है? अभी आप उनका देखेंगे वो सब प्रिंट आउट निकाल लेते हैं A to Z। प्रिंट आउट निकाल के अंडरलाइन मार्किंग, देन यू कैन सी स्टिकी नोट दिस दैट एंड सी मेक सो मेनी नोट्स ऑन हर ओन कि जितना बुक के अंदर नहीं लिखा उससे ज्यादा नोट्स बनाते हैं, बिकॉज सी इज ऑलवेज बीन अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। यू कैन सी she can never fail, anybody can fail but she cannot fail the exam. I always say her कि हम तो 10-12 साल से कोई किताब खरीदा ही नहीं है। I am doing all the study on screen only because our exams are computer based only. So if I will not develop that skill, then how the जी student will follow me? So जी she says that तुम अपना अपने पास रखो। I am not concerned. I will follow my own style only. Unless and until I touch the paper, I don't fail to study. I cannot study on screen, even though the classes she has done mostly online in last 2 years. But then she is making her notes in pen and paper. I will say that this is, लर्निंग स्टाइल। yeah, the question is that suppose there is a person who has never worked anywhere. They are pure student type. Now जी you as a person has worked in the industry, worked on the machine, computer, ERP system and all that. So you are जी conversant with the computer technology. इज गुड, सही है। Works. You don't feel discomfort when you are in front of the screen. But सही if है। there is a normal student who have never worked in organization and they will work on pen and paper, then in the exam time they don't able to bring the speed. सही है। Taking more time in reading the stuff, writing. मेरे को स्टूडेंट फोन करके बोला, बोले सर आप बोले थे हम आपका बात माने नहीं, हम वहां पर स्पीड नहीं दिखा पाए,
So it differs. 5 fingers are not same. सही It है, differs person to person. For your सही है. kind of person, like in our class, Yogita, then Maharanva and all that, they are very conversant with the computer screen. So maybe they are working, making their notes in pen and paper, it doesn't matter. The first thing. Second thing, whether it's pen and paper, whether it's on screen, notes to अपना बनाना ही पड़ेगा. If you are ये reading something, you cannot understand by reading. You have to write something to understand what exactly you have studied. So that's ये the बात first. है, हाँ. और एक टाइम सेविंग टिप, क्योंकि ये जो स्टडीज में और एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग कापलान इसके उसके पीछे बहुत भागते हैं. टू बी फ्रैंक, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस विल बी द राइट. जो मेरे साथ हो गया वो जरूरी नहीं कि सबके साथ ऐसे ही होना चाहिए. Yes. जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई हैव नेवर परचेज्ड एनी कैपलान, नथिंग. आई हैव रेफर्ड आल्सो. मेरे पास आपका नोट रहते हैं. और एक कैपलान के जो एग्जाम किट है, Yeah. एग्जाम किट A to Z इस्तेमाल करते हैं, A to Z. तो सब क्योंकि it's done. हाँ, बट उसका जो दूसरा जो बुक है, जो उसको क्या बोलते हैं, इवन आई Study डिड नॉट text. स्टडी टेक्स्ट, Yes. आई हैव नेवर यूज. मैं उसको इस्तेमाल नहीं करके अच्छा. आई यूज इट लेस देन 5%, लेस देन 5%, बी फ्रैंक. अगर मैं ये But बोलूंगा कि बिल्कुल टच नहीं किया, वो भी झूठ रहेगा, बट इट yes, इज लेस yes. देन. I mean to say that whenever you asked any question between last 3 years, I have never find that you are asking any illogical question, which is coming bold from the blue, which does not relate with the syllabus or what you are asking. Never you have asked. Since CMA US time and this ACCA 9 subjects which you have given the exam, never asked any illogical question. I'm not saying that everybody should be like you, but when you study and you are asking something, it is crystal clear that your approach to study is correct or not. So when you are asking a particular question, it says that you are studying in the right direction. Now there is no guarantee to anybody who whatever we study that we will pass the exam, because something is in the hand of God also, no? But when we are giving our 100%, we cannot fail the exam. That proves in you. You says that ki bhaiya, when I can do, you can also do, but you need to follow the procedure. सही है. अप्लीकेबिलिटी लेवल जो है वो बढ़ाने पड़ते हैं. द मोमेंट यू कम आउट ऑफ द इंडियन सिस्टम टू दिस इंटरनेशनल सिस्टम, वो एक अलग लेवल पे आपको पहुंचवाना पड़ता है. Yes. Last question from my side. बोलिए. In your professional level journey, which subject you find is most difficult, order, and which is most easy, and why? जवाब तो मैं दूंगा. आई हैव माय आंसर, बट it also differs from person to person. Yes. तो in my journey, ACCA का पूछ रहे हैं ना आप? Yes, yes, ACCA, yes. In ACCA जो मेरे को सबसे दिक्कत आया in terms of examination, not in terms of study. In study it was okay. In terms of study जो मेरे को सबसे दिक्कत आई, it was audit and assurance. अच्छा. हाँ, वो क्या बोल रहे, क्या पूछ रहे, वो समझने के लिए, जैसे मैंने बोला, 2 मिनट और बैठना पड़ता है. अच्छा. Yes. इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, मुझे जो क्या बोलते हैं, जो सबसे डिफिकल्ट महसूस हो गया, इट वाज AFM. और AF में मुझे वो टाइम का मसला आ गया, क्योंकि वो सवाल ही उस तरीका का था कि आपको बॉम्बे जाना है, वो पहले दिल्ली का एड्रेस देगा आपको. अच्छा, ठीक है. तो उसमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह कैलकुलेट करने के लिए वो बहुत दिक्कत आ रहा था. तो बट somehow crack किया, and I managed to get somewhere around 60 in that exam. प्रॉब्लम नहीं आया उसमें. आई ट्राई टू मैनेज टू पास. मुझे डर था कि फेल हो जाएगा क्या, सो बट आई हैव पास्ड. और इजी अगर आप पूछ रहे हो तो इट इज PM. आई बिलीव PM सबसे PM or इजी था. APM? No. PM In इजी था. professional level, which is the easiest? In professional level? इन प्रोफेशनल लेवल तो आपके वो वाला क्या नाम है, SBL. SBL. अच्छा. SBL तो रोज की कहानी है ना. तो somebody at my level, they will be doing it on daily basis. Yeah. Good. Because you are SBL, already practicing that in regular life. हाँ, SBL तो वो है. SBL के बाद अगर आप पूछ रहे हो तो APM के बाद है तो then it is SBR, and AFM was the toughest one. अच्छा. Good. Obviously, this thing will be different for different persons. Normally, the APM pass percentage is very bad. Always. Like you said, now auditing. So similarly in professional level, advanced auditing and assurance. Very bad result in these two subjects, EPM and advanced auditing and assurance. So people or students feel nightmare
APM was okay for me. APM में अगर यहाँ पे कोई this is APM subject sir? Yes, yes, APM is going on. So अच्छा what is your APM में advice? अच्छा ओके नहीं APM में जो मेन चीज है APM में पहले आपने जो PM में जो पढ़ा है ना उसको थोड़ा किनारे रखिए. हाँ, And in APM what you should concentrate you should formulate yourself how to measure things. प्रोग्रेस कैसे मेजर करना है पहले वो समझना चाहिए और डेवलप करना चाहिए. क्वेश्चन में वही पूछेगा वो घूम फिरा के वही पूछेगा कि हाउ व्हाट विल बी द मेजर टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अचीवमेंट और स्ट्रेटेजी सक्सेस. वो वही पूछेगा. लैंग्वेज अलग अलग पूछेगा. हाँ, उसमें 3-4 वर्ड भी ऐसे डालेंगे जो हमको जल्दी समझ में नहीं आएगा. हाँ, दे में आज ग्रीन फाइनेंस क्या होते हैं ग्रीन वो सब क्या होते हैं जो कभी सुना ही नहीं होगा हम लोग ने. हाँ, बट उसका जो फाइनल जो मकसद है फाइनल इनका जो पूछना चाह रहे हैं दैट विल बी हाउ टू मेजर द प्रोग्रेस हाउ टू मेजर द परफॉर्मेंस. हाँ. सो दिस 3 वर्ड्स हाउ टू मेजर वो आप ध्यान में रखिए हमेशा. एपीएम इज ओके इट इज ओके टू मैनेज. उसमें कुछ खास फॉर्मूला या खास तरीका कुछ नहीं है उसमें. And don't remember, don't try to mug up because there is no limit of mugging up in these subjects. मैं पहले ही बोल दिया सर. Yes, sir. हाँ If you try to mug up, then you will fail. You cannot मतलब understand here. जी जी मगअप करने से कुछ नहीं है. दैट मगिंग अप आपका जो हमारे इंडियन सिस्टम है उसमें से थोड़ा सा डीलिंग करके आना पड़ेगा. आई हैव Yes. सीन दिस इन माय मेरे बच्चों में भी वही है. मगअप करके जाते हैं बोले कि बाबा क्वेश्चन तो सिलेबस के बाहर से आए थे. तो दैट अप्रोच विल हैव टू चेंज. Yes. Good. It is purely applicability और APM में especially we have to concentrate on how to measure progress. वो how to measure का एक formulation हमारा वो 3-4 क्वेश्चन करने में आ जाएंगे then it is more easy to crack the exam. It's actually practice which you did. They need to practice so that they can pass. And practice in a proper way. जी Understand? practice I would say the practice in the proper way that is more important. आपको तो मेरे बारे में मालूम ही है. मुझे उतना टाइम नहीं मिलता प्रैक्टिस करने के लिए बट प्रॉपर तरीका से क्या ये what is being questioned by the examiner that you have to understand first. एंड एपीएम में वो हमेशा मेजरमेंट का ही मकसद से पूछते हैं सवाल. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. Because the subject name is performance measurement. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट वो मेजरमेंट ही उसमें मेन चीज है. एक बार मेजरमेंट आपको पता चलेंगे एंड हाउ टू मेजर इट आपको पता चलेंगे देन यू आर ऑफ कोर्स वो Yes. लेवल का आदमी बन गए आप. Good. Anybody has any question to ask from him? Because he's in front Yes, of sir. us. He's very busy always. Yes, Yogita, tell him. I want to ask you, I mean, if you take one chapter like on performance measurement, or like we did MIS just now, how do you study it and then to understand, and then how do you apply it so that you understand it and in exam you can, relate to in the question and answer? Yeah, as I said, see, you should be concentrating on the concept of that particular part or the part of the chapter or the chapter itself. And in APM, if you have some specific part that can be discussed, but you should go to the concept. And in APM, see, they're breaking down what are the elements in a performance that needs to be measured for success, and whether those performance measures are set direct in the correct direction to meet the strategy of the company. That is the whole essence of APM. So when we are able to measure those performance elements, then it is okay. You can crack the remaining part. It is all about identifying what to measure and how to measure. Thank you. Relating for to this, example, Yogita, we will be doing a question today. Relating to this, I will be doing a question today. Just for example, see, basically a company will be having a strategy to become a market leader for a particular product. So what will be the right measure for it? It could be the market share, it could be the revenue generated, and how are you going to achieve that? We have to see in the given scenario. Scenario will not be giving you all the financial metrics and the market data. Within the given data in the question, you have to find out what can be measured in order to achieve that particular strategic objective. And then you measure how to measure. You mention how to measure it. At least by this time, you'll be getting at least a 4 mark out of 10 question. 4 out of 10.
and remaining you will be getting by your literature. I think he's saying that the company has an objective to become market leader. That's the crux of the question. So for that becoming market leader, what are the measures we need to check? What are the Yes. measures we should apply so that we can become market leader? So he's saying that it can be market share, it can be market size, it can be revenue generated, it can be proportion of revenue with a particular product. There are different things which we can analyze. Depending upon situation, we will cover those factors, and then whatever the general Yes. concept you will And take, we should not take the go marks. into something which is not given there. हम अपने मन से लाना नहीं चाहिए. It should be something relatable. It is not a place where we can exhibit whatever we have studied in the textbook. We should be acting and performing within the boundaries of the examination question only. कभी कभी क्या होता है, we bring some new literature, some new formula which is not even relevant to the question. उसका लिखते हैं literature, you will not get the mark. The literature is pointing to something, so we should understand what they are pointing to, and then we should explain it. Good. महारानुआ जी क्या बोलना है, फटाफट बोल लीजिए, बोलिए सर. Yeah, hi. Actually, my question was regarding the professional marks of 20 marks, which is means like required in the examination. So many means like in many videos or many means like ACCA describes that we should not follow tabular method. Some describes that we can follow tabular method. Some describes that we need to write, we need to avoid writing in points and only in paragraphs. So means like if you have attempted any questions with points or paragraphs, did that matter actually during the marking timing? And means like bullet points we cannot follow bullet point because of two reasons. One, it is not encouraged in any professional exam to write in bullet point. And second thing, if you are going to bullet point, that means you are suiciding yourself. You are removing that much what we call words in your answer. Otherwise, which was otherwise easy for you to make your answer according to the length requirement. See, there is a length requirement of each answer. When you're writing bullet point, that means you are writing in 3-4 words. The same thing can be written in 10-11 words when you're writing in sentences. And what about the tabular formats? Table may be needed sometime, but table also can be easily converted into literature. In as far as I remember, I did not use any table unless it is extremely necessary that to compare figure. For example, if you want to compare a figure, then you may need to mention, but that also can be converted into literature easily. So basically, when question comes regarding evaluation, where we put up advantage, disadvantage, or pros and cons, we can write it in paragraph, means likewise instead of going to tabular methods. Right? Yes. Actually, we should not write in tabular in that way, because that they regard as a very what you call very foolish type of thing. They are expecting from you some sort of essay, small essay, in which you are able to differentiate the pros and cons in a single paragraph itself. For example, in the first paragraph, you are mentioning regarding the rate of return from some investment project. So if one project is having good IRR and the other one is having bad IRR, then you should be saying that in terms of figure, and then also provide 2-3 assumptions why it may be bad and why it may be good. They are not expecting many points from you. If you write the points which are relevant and with proper justifications and evidencing from the question as well as the academic literature, even 3-4 points will fetch you the mark. And about conclusions? Conclusion is important. Without conclusion, you will be losing at least for 3-4 mark. At least 3-4 mark. Okay. If you go to this ACCA exam kit, conclusion part is at least carrying 2-3 mark or 3-4 mark. And if you write it better, in some cases, whatever mistake you have done above, that also will be erased away by the conclusion. Okay. Yeah, that was just from my side. Thank you. Good. Yeah. So thank you, Lakman. Thank you, sir. And always keep in touch with us. Always guide the student in the right direction whenever it is. Don't worry, sir. जब टाइम है तो आता हूँ. Yes, sir. जब टाइम तो- आपके पास है, कभी मिल लेंगे हम लोग. कभी अगर सऊदी आते हैं तो जरूर मिलेंगे सर. कभी जाना नहीं हुआ है. Never. Very good, sir. Okay. Thank Thank you you, for sir. coming. Thank Thank you. you for giving your time. Thank you. Thank you.
because they are giving APM exam, they are very tensed. How to pass, what to write, and all that. So for that reason, you are coming in the class and giving them the. जितना डरा रहे उतना टफ नहीं है. Just you have to be specific और it is all about measurement. Measurement में focus कीजिए, आप crack कर पाएगा इसको. Okay. Thank you, sir. Thank you, Lakman. Thank you for your time. Thank you. Yeah. अभी महारानवा जी. Yes, sir. एक सेकंड, इसको फिर से